So what I'm going to do is, to begin with, few things that I want you to know very clearly. Just a recap. You should know what a galvanometer is, which I have discussed, right? Moving coil galvanometer. What does the galvanometer G detect? It detects current. So if it's kept in series with a branch, it will detect the current in that branch, right? Yes, sir. Yes. If it is Yes, sir. zero, this is zero deflection, that means there is no current in that branch. If it's showing deflection in one direction, it's current in one direction. If it's showing deflection in the other direction, that's current in the other direction, right? Yes, sir. Yes, That's sir. one. So, and I have discussed in the past that a galvanometer could be converted into an ammeter, and it could be converted into a voltmeter. And both ammeters and voltmeters, and sometimes I'm going to use ammeter just like I'm going to use a galvanometer just like a galvanometer. So what I'm going to discuss today would involve a galvanometer, but it would be not converting that galvanometer into an ammeter or voltmeter. It will be just an element kept along a branch of a circuit just to detect whether there is current or not. I'm not going to measure the current through the galvanometer. So I'm not going to convert it into an ammeter. It's just a device that will be used to detect current, right? That's all. Yes, sir. Yes, sir. One thing that should be very clear. The second thing you must know is, if there is a resistance of length L, and suppose its area of cross section is A, and if rho is the resistivity, then the resistance is given by rho L by A. Gives me the resistivity. Gives me the resistance in ohms. Rho is the resistivity, L is the length, A is the area of cross section, assuming A constant, right? That's one. Now, if suppose there is a flow of current in this direction, there is a flow of current in this direction, what happens is, there is a total potential drop. Across the flow, there is a drop, which is I into R. If I is the current, then the potential drop is going to be I into R, right? So Yes, sir. so if this is V volts, this would be 0 volts. That's a drop. V would be I into R. V, the drop. So from here to here, the drop would be V. That means if this is V volts, this will be 0 volts. V volts drop, right? And if its rho is constant along the length, if its area is constant along the length, then if I choose a certain, say if I choose 1 centimeter along this length, anywhere, say if I choose 1 centimeter along this length, then the drop V1 here is going to be the same as the drop over a 1 centimeter length anywhere. If over 1 centimeter is here, the drop is V1, then over 1 centimeter here, the drop would be V1, the drop would be V1, and so on and so forth. That means the drop per unit length will be constant. The drop per unit length will be constant no matter where that length is selected, right? Yes, sir. We will define a quantity called potential gradient. Which is essentially rate of change of potential with length. That means volts per meter, change in volts per meter or per unit length. In this case, the potential gradient is V by L. V by L is the potential gradient. V by L is the potential gradient. So, if over a length L1, so I'll call it say K. This potential gradient, volts per meter, I'm going to call say K. Right? And if I have a length L1,
then the drop over L1 would be KL1. KL1 would be the drop over length L1. If K is the potential gradient, PG, I'll call it PG, potential gradient, then KL1 would be the drop over length L1, no matter where that length L1 is selected. Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. The other thing that I'm going to use is, in all the discussions, this wire that I have, so potential gradient is change in potential per unit length. That's potential gradient, right? Yes, sir. Now, wherever I'm using such a wire, it's going to be a reasonably thick wire. When there is current flowing through a wire, there is joule heating. These many watts, right? I square R watts, joules per second is generated as joule heating, right? Because Yes, sir. of the joule heating, if R is the resistance of this wire, joule heating, what happens? Is the temperature बढ़ेगा? Temperature of the wire increases. Yes, sir. Yes, sir. अब temperature बढ़ेगा तो resistance बढ़ेगा. If it's a metallic wire, see, in metals, the resistance at temperature T2 is given by resistance at temperature T1 into 1 plus alpha into T2 minus T1. Alpha is the coefficient of resistance per degree centigrade. It's measured in per degree centigrade or per degree Kelvin. So, if the temperature changes from T1 to T2, resistance changes more from RT1 to RT2 given by this relation. Final resistance would be initial resistance into 1 plus alpha into change in temperature. In metals, alpha is positive in metals. And as temperature increases, resistance increases in metals. Metals में क्या होता है? जैसे जैसे temperature बढ़ता है, resistance बढ़ता है because of positive alpha. There are some materials in which alpha is negative. अगर alpha negative है ना बेटा, तो जैसे temperature बढ़ेगा, resistance कमेगा. All right. Yes, sir. Problem will be if I'm dealing with a wire and I'm using some standardization around that wire. इसका अगर resistance ही बढ़ता जाएगा, तो I'm in trouble, right? That'll Yes, be a sir. difficult. So what I want is a wire, a material, right? A material. See, alpha depends on the material. I want a material whose alpha is really, really small. If alpha is really, really small, then alpha delta T would be negligible. Yes, sir. Yes, sir. 0 के बराबर होगा, तो RT2 will be equal to RT1 approximately. Oh, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what I want to choose is material in which alpha is very small. ऐसा material select करेंगे हम इस wire के लिए. Alpha बहुत छोटा है. Alpha really small, coefficient of resistance. ऐसा material ताकि if the temperature rises, resistance does not change significantly. Practically constant resistance for a given length of the wire, right? Yes, sir. Yes, sir. Now, if alpha is very small, RT1 and RT2 will be equal. It doesn't happen in metals. It happens in metal alloys. So the material that I'm going to select would be a metallic alloy, and two materials are used. ये सब याद रखने का है. Two materials are used. Generally, one is constantan. ये एक alloy होता है constantan. Two manganese. Because they have small values of alpha. Therefore, if the temperature rises, change in resistance is negligible for metallic alloys. Yes, sir. Yes, sir. Who are generally used in real life. Constantan and manganese. ठीक है? Yes, sir. Now, see, when I was discussing ammeters and voltmeters, which are essentially derivatives of the galvanometer. When I'm saying derivatives, it is not differential calculus derivatives derived out of the galvanometer. All right. The problem was a voltmeter was a very convenient device to measure the potential difference between 2 points.
But the problem with the voltmeter was accuracy. There was an error produced in a voltmeter. कैसे error produced होता था? Suppose between these 2 points, I had to measure the potential drop. So what I did was, I connected these 2 ends in parallel to a voltmeter. But the voltmeter did have a resistance. Yes, तो sir. इसका ओरिजिनल ड्रॉप क्या होता था? I into R होता था ड्रॉप. पर जब वोल्टमीटर कनेक्ट किया ना, then the current flowing through this resistance will become I1 से. बाकी करंट यहाँ से फ्लो करेगा I minus I1. So which means now it's not going to measure I into R. It's now going to measure I1 into R. Yes, है ना? sir. तो error Yes, sir. produce होता था ना वोल्टमीटर में. Yes, sir. Yes, sir. So there was an issue with measuring potential differences in a voltmeter. It was subject to errors. So now here we have a device. तो सोचो अगर वोल्टमीटर से कोई करंट ही नहीं फ्लो करता ना, तो वो ट्रू पोटेंशियल ड्रॉप दिखा देता. हाँ सर. है ना? So we now need an arrangement which does not draw current and therefore will reflect the true potential. Okay? Yes, Yes, sir. sir. So essentially that arrangement that I'm going to talk about is called a potentiometer. It's a meter that measures the potential difference between 2 points, right? Measures potential difference. Much more accurately than a voltmeter. It's a lot more accurate than a voltmeter. That's it. That is its advantage. We will see very shortly कि इसका disadvantage क्या है. Voltmeter is a very छुटका सा element, very छुटका सा device. Voltmeter, very handy. This is kind of bulky. ये थोड़ा बड़ा होता है. We'll see that in a short while. It's kind of bulky. That's the only disadvantage. Now, what are the things that we generally? Suppose I am giving you a battery, right? Suppose this is a battery. एक बैटरी में क्या क्या होता है? What are the things that you see in a battery? EMF of the battery. EMF क्या होता है? EMF means potential difference between the terminals when no current is flowing through it. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. EMF is the potential difference when no current is flowing through it. Right? Yes, sir. And then there is R, an internal resistance in a battery, right? Small r is internal resistance of the battery. Yes, sir. If the internal resistance is 0, then the terminal voltage and EMF will be the same. Yes, sir. Yes, sir. But if there is internal resistance, then if I is the current, then the potential difference between its terminals will no longer be epsa. It's going to be epsa minus IR, क्योंकि IR जो अंदर internal resistance है ना वो खा जा रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Right? So the terminal voltage, if a current is flowing through it, will no longer be epsa. ठीक Yes, है? sir. Yes, sir. So अब हमको क्या चाहिए? Somehow I want an arrangement that will. तो सोचो, if I have an arrangement that can measure epsa of this cell without engaging a current passing through the cell, एक arrangement ऐसा निकाल सके जहां पर I could measure epsa without, I can measure the potential difference between its terminals without permitting flow of current. तब तो true epsa measure हो जाएगा क्योंकि IR 0 हो जाएगा, I अगर 0 है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Internal resistance
resistance is also something that I want to measure. Yes, sir. रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता है कि बैटरी के अंदर कोई एक रेजिस्टेंस वायर लगाया होता है जिसका नॉन रेजिस्टेंस होता है. That internal resistance is because of the chemicals inside through which the current pass. So it has to be measured somehow. You can't Yes, sir. calibrate it. It has to be measured through experiment. And both things are important. EMF, the true EMF of the cell when no current is flowing. ताकि actual difference between the terminals is there for our service. And internal resistance. I want these two things. Voltmeter में ऐसा नहीं कर सकते थे. Voltmeter में if I connected a voltmeter, then of course there is some current passing through this. So it will not measure EPSA. It will measure EPSA minus IR is what this will measure. The voltmeter. Yes, sir. Yes, sir. But if I had a voltmeter like this and there was no current flowing through this, then that voltmeter could have measured the true EPSA. Yes, sir. Yes, sir. So I need something like that. A voltmeter is incapable of doing that. That's why I need a superior arrangement that could measure my EPSA almost 100% accurately. Okay? Yes, sir. Yes, sir. That arrangement I'm going to describe. That's called a potentiometer. Okay? Now, Yes, sir. what all do we need in this? इस potentiometer में क्या-क्या चीज होना चाहिए? What all should a potentiometer have? A battery of known EMF and known internal resistance. पहले ये चाहिए. And I'll draw that also. एक बार लिख लो. Internal resistance. Known EMF, so ये EPSA 1 है. And known internal resistance for it. ये known है. There is a battery about which we have complete knowledge information. All right. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, a wire, a thick wire of length, generally, roughly, say 7 to 10 meters का ये वायर होगा, whose resistance we know or we can calculate. Length, constant area of cross section, thick uniform wire, thick uniform बोलते ताकि area of cross section same रहे. Of length 7 to 10 meters, whose resistance R is either known or could be calculated as R equal to rho L by A. L उसका length है, rho resistivity है, A area plus. या तो पता होगा or I can calculate that. Made of constant or magnum. Manganese. क्यों? Because these two have low values of alpha. So that when there is a current flowing through this wire, there is a negligible change of resistance of this wire. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर resistance ही बदल जाएगा तो the whole game will get spoiled. Yes, sir. ऐसा एक वायर चाहिए. Either resistance or resistance per unit length R by L पता है, कुछ पता है. Somebody could give you rho A to resistance per unit length पता है, whatever. You know that. Okay. Now, these are the only two important elements that we need in addition to a galvanometer with a jockey. I'll tell you what a jockey is. Galvanometer with a jockey and
an unknown battery. This is the idea. This is the part of the experiment. Unknown battery. That battery का उसका EMF है epsa, उसका internal resistance है small. This battery का I want to compute epsa and I want to compute internal resistance. This is the hero of our experiment. This unknown battery. These are the workers. They will act to determine this. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. All right. Now, let me show you the arrangement. Let me show you the arrangement. How it is all done. All right. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एकदम दिमाग में बैठा लेना ताकि घर पर पढ़ना नहीं पड़े. Right now, right here. See, this is my known battery. epsa 1 जिसका internal resistance is R1 तो उसके बाहर बना सकते हैं, right? Yes, sir. Yes, sir. This is my known battery. epsa 1 R1 known. And there is this thick wire resistance है connected between points A and B इस तरीके से, and there is a switch और a key. एक की है, इसको जब ऑन करोगे तो सर्किट एक्टिवेट होगा. ये की है, ठीक है? It can swivel like this. इसको जब ऐसे कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. There will be a current in this upper loop. All right. Yes, sir. Yes, sir. And this circuit is called a primary circuit. Primary circuit. AB. What all we know about AB? AB का resistance, or either we know it or we can compute it. Resistance R and its length N. Length है. ठीक है? Yes, sir. अब देखो क्या होता है. Suppose when the switch is closed. स्विच क्लोज मतलब क्या है? सर्किट एक्टिवेट कर दिया, मतलब इसको क्लोज किया. Yes. ये ओपन है, अब ये क्लोज कर दिया. ऐसा यहाँ की था, इसको ऐसे बना सकते हो. ऐसे there was a key like this. There was a key like this. Sometimes ये जो की है इस तरीके से ना, sometimes ऐसे भी बनाते हैं. This is also अब when the key is closed, do you realize there is going to be a current in the loop? There is going to be a current in the loop. A current I flows through the loop. Current I flows through the loop. इस करंट का वैल्यू कितना है? इस पूरे लूप में एप्सा डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है ना बेटा. Yes, sir. इसका पूरे का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन द लूप इज कैपिटल आर प्लस आर वन एप्सा वन डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस आर वन. एबी का रेजिस्टेंस कैपिटल आर नोन और कैन बी कंप्यूटेड. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. so now ये पार्ट मिटा दे. दिस पार्ट, so I need some space. Yes, sir. Yes, sir. That current I will flow from B to A in this case, right? So potential drop from B to A कितना होगा? V. How much will be the potential drop? I into R ना, इसका पूरे Yes, का sir. resistance R है, right? So potential drop would be I into R. Yes, sir. Yes, sir. Now potential ना uniformly drop करेगा.
The drop per unit length will be the same. The total drop over a length L is I into R. Yes, sir. Yes, sir. From B to A इतना drop. मतलब अगर B को V volts मान ले तो A will be 0 volts, है ना? That will be the drop from B to A. If B is V volts, A will be 0 volts. Where V इस तरीके से compute कर सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. I into R से I निकाल लो, R पता है, तो I into R is the drop. तो अगर ये V volts है, ये 0 volts है. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये small R1 0 होता, तो ये epsilon 1 हो जाता, ये 0 होता. अगर ये R1 0 हो जाता. Yes, sir. Yes, sir. Potential gradient. Change in potential per unit length. Potential gradient in AB. इसको हम लोग K बोलेंगे आपसे. Potential gradient. Change in potential per unit length. हाँ, that is V calculate कर लिया, divided by length L, volts per meter. इतना volts per meter is the potential gradient. Yes or no? इतना volts per meter is the potential gradient. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That means unit length here, या unit length here, या unit length here, same drop होगा. Over equal lengths, the drop would be the same because it's uniform gradient. ये uniform gradient है. Yes, sir. Yes, sir. That can happen only if the area of cross section is constant. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, अब ले आओ. ये तो एक अरेंजमेंट फिक्स्ड अरेंजमेंट है और इसका लेंथ करीब सोचो 7 to 10 meters रहता है, बहुत लंबा रहता है. It's really huge, है ना? तो एक्चुअली क्या होता है जानते हो? इन रियल लाइफ ना दिस इज वेरी लॉन्ग. इतना लंबा सर्किट कैसे ले जाओगे एबी? सो व्हाट इज डन इज कि ना टिपिकली ये जो एबी है ना, ये ऐसे आई टेक अ वुडन प्लैंक ले लेते हैं. ये पॉइंट ए है उस प्लैंक में, ये पॉइंट बी है. ए से बी में तो 10 मीटर बहुत लंबा हो जाएगा. तो व्हाट इज डन इज ना इस तरीके से इसको ये 10 मीटर ऐसा, maybe 10 rounds or something. You know what I'm saying? Yes, sir. That's the length from B to A, 10 meters. हो सकता है each one of them is now 1 meter only. Yes, sir. Now, this is a fixed arrangement, and I know everything about this wire. Its resistance या resistance per unit length या its rho, area of cross section, and ये किस मटेरियल का बनाएंगे? Manganese. Manganese. ताकि Yes, sir. when current flows through this wire, its change in resistance is practically zero because alpha is small. Temperature coefficient of Yes, sir. resistance is small. Alpha. ठीक है? Yes, sir. ये अरेंजमेंट है. पर इस अरेंजमेंट का करेंगे क्या? हलवा पूरी थोड़ी बनाएंगे. इससे एक हमारे घर में एक बैटरी है, उसका ईएमएफ निकालना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. That's the purpose. You know what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. That's what I want to do. So now what I'll do is I'll create a secondary circuit. This is ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट है जिसका हमको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है. हाँ. Now what I'll do is एक secondary circuit बनाएंगे नीचे. उस secondary circuit में this battery unknown EMF and उसका unknown internal resistance small r. उसको गैल्वेनोमीटर से यहाँ कनेक्ट करेंगे और उसके एंड पे ना एक अच्छा एक चीज है, ये ना कैलिब्रेटेड है. AB is calibrated. Means there could be a scale attached जिससे I can, if I have a point P, I know how far it is from B or I know how far it is from A. एक scale रहता है along AB there is a scale, so AB is calibrated so that if there is any point P, then I know how far it is from A or how far it is from B. I know that. ऐसा है, right? So एक scale है, दिखाएंगे तो यहाँ गंदा हो जाएगा डायग्राम, ठीक है? पर एक scale attached रहता है which will tell me
the distance from A of a certain point, any point, or distance from B. इस galvanometer के end में ना there is a sliding jockey. This is a jockey. वो jockey को ना हम यहाँ connect करेंगे and it can slide along AB. Can slide along AB. Can slide along AB. This jockey ऊपर it can slide along AB. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. And this circuit is my secondary circuit. या secondary loop या secondary circuit जो भी. This is my secondary circuit or secondary loop. Now, suppose now this is the end of the jockey J. This is the end of the jockey J. लिख लो S. जो slide कर सकता है along this. अब क्या होगा यार? अगर ये jockey को हम slide करेंगे ना यहाँ पे, then realize resistance per unit length is known. So if I know this length, I would know the resistance of this length. That Yes, will be sir. proportional to this length. I would know the resistance of this length. That will be proportional to this length because I know R. So I know R by L. Resistance per unit length हमको पता है. तो ना Yes, sir. both sides of the jockey, I know the resistance of this part of the wire. I know the resistance of this part. अब क्या होगा? ये जो current यहाँ आ रहा है ना, अब वो current जो है ना वो तो यहाँ से थोड़ा सा flow करेगा. Yes, sir. Yes, sir. So now the drop from B to A, that current is not entirely going from B to A. Yes, sir. That current is getting distributed. Now what will happen is problem होगा. अब ये potential gradient disturb हो जाएगा, V by L नहीं रहेगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. right? And depending on where this J is, अगर इस J को slide करेंगे ना, तो इस part का resistance और इस part का resistance बदलेगा, तो यहाँ पे ये जो divide हो रहा है ना, that will depend on इसका क्या resistance है, इसका क्या resistance है, यहाँ वाले का कितना resistance है, and so on. उन factors पर depend करेगा, right? Yes, sir. Yes, sir. So depending on where the point J is, इसको slide करेंगे ना, तो यहाँ से ना अलग current flow करेगा. From J to A, there will be a different current flow. So right? So then what would happen is potential gradient change हो जाएगा. Yes, sir. यहाँ से Yes, यहाँ drop, suppose कुछ हुआ, यहाँ से यहाँ V minus 0 नहीं होगा, V volts नहीं होगा. ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. But as I keep sliding the jockey, there is a point. There is a point J on AB. There is a point J on AB. इस AB पे है ना एक point है J, for which zero deflection of the galvanometer occurs. For which zero deflection of the galvanometer occurs. मतलब क्या होगा कि galvanometer से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. Yes, sir. No current flows through the galvanometer. For a certain J, for a unique J, एक particular J है जो हम लोग देखेंगे exist करता है. No current flows through the galvanometer J. अगर कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा galvanometer से तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा galvanometer का. Yes, sir. Yes, sir. This point is called the null point. This point is called the null point. Point that will result in no flow of current through the galvanometer, zero deflection of the needle of the galvanometer. एक point है यहाँ. There is a point for which the galvanometer does not deflect.
दैट्स अ नल पॉइंट। इसको ना भाई हाथ में ही है ना तुम्हारे जॉकी, इसको आगे पीछे करके देख सकते हो, इसको ऐसे टर्न, बिकॉज़ दिस इज अ मूवेबल जॉकी, दिस इज अ मूवेबल जॉकी, इट कैन स्लाइड अलोंग एनी फॉर अ सर्टेन पोजीशन j, deflection 0 है। ऑलराइट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so then that's the point that I want to bring the jockey to with the experiment. That's the part of the experiment. I want to bring the jockey to such a point. I want to bring the jockey to such a j. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए आप क्या होता है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? What does that mean? It means if there is no current through this galvanometer, right? That means इस पार्ट में भी कोई करंट नहीं है। Yes, sir. अगर यहाँ करंट नहीं है तो यहाँ करंट क्या? क्योंकि अगर यहाँ करंट फ्लो करता तो यहाँ पे थोड़ी ना हवा में उड़ जाता। Yes, sir. Yes, थोड़ी उड़ Yes, जाता। sir. तो ऑब्वियसली अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं है तो इसमें भी कोई करंट नहीं होगा। Yes, sir. तो मतलब that means in the lower loop there will be no current. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The arrangement that we wanted. ये ना जिसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं बेटा, I don't want any current to flow through. तो एक अरेंजमेंट तो आ गया where you know there is no current because ये zero deflection दिखा रहा है for a certain position, मतलब नीचे से कोई नीचे सेकेंडरी सर्किट में there is no current flow. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Suppose this point, ये ना ये J कहीं पे दिख जाएगा, सोचो that's the point J. तो ना A से J का बीच में डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा, मतलब there is a मार्किंग लगा रहता है यहाँ पे, एक स्केल रहता है। सोचो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो यहाँ स्केल रहता है, you know how many meters from A, ठीक है, which you can measure through experiment. So then A to J का distance ना I would know that length is say L. This is L, मतलब A से J का distance is known. यहाँ से ये L सेंटीमीटर से, okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now if there is no deflection, मतलब जो करंट ऊपर से जा रहा था वो ऊपर ही जा रहा है, it is not branching off in this. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Current which was coming here is going underway. इसका मतलब क्या है? इसका potential gradient is not affected. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Drop अभी भी I into capital R है, Yes, sir. that divided by L will give me change in potential per unit length. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ potential बन रहा है, पर अगर यहाँ से आ जाओगे पोटेंशियल यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, है ना? Yes, sir. यहाँ Yes, से आ sir. जाओगे पोटेंशियल यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, है ना? यहाँ से यहाँ कम रहा है तो अगर यहाँ से आ जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट? Yes, sir. Over this length AJ, from A to J, see यहाँ से यहाँ V volts बढ़ता है over a length L, potential gradient K which is V by L, right? So over a length L, over AJ, potential increases by KL, K into small l है ना? K is the change in potential per unit length. So for a length small l, the increase in potential is KL. ये पता है हमको तो इन दोनों के बीच में, where J is obviously at a higher potential compared to A, है ना? Yes, sir. क्या potential difference is K into L, where K is what? K is the potential gradient. Yes, sir. Yes, sir. Now अभी तुमको यहाँ से आपके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप पता, सपोज A को 0 वोल्ट्स दिया हमने, तो ये सारा 0 वोल्ट्स है, ये टर्मिनल भी 0 वोल्ट है ना? ये भी 0 वोल्ट था ना, ये सारा 0 वोल्ट्स हुआ, Yes. ये कितना वोल्ट्स हुआ? ये एप्सा वोल्ट्स हुआ, यहाँ से एप्सा बढ़ा, ये 0 है तो ये बड़ा एप्सा वोल्ट्स हुआ यहाँ पे। अब यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है बेटा, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है ना, हाँ, Yes, sir. sir. तो ये भी एप्सा होगा। Yes, sir. No current flowing through the galvanometer. तो मतलब ये all these points must be at the same potential. J and this point must be at the same potential. Yes, sir. Yes, sir. J must be EPSA. तो देखो बैटरी का true EMF null point से मिल जा रहा है. This the drop here is EPSA.
जो Yes, निकालना है sir. वो निकाल चुके हैं, बिकॉज एप्सा, ये अगर लेंथ एल पता है तो एप्सा द ड्रॉप फ्रॉम ए टू जे वुड बी के इनटू एल. के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, एल इज द नल पॉइंट का मेजरमेंट, Yes, sir. वेयर के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है बेटा, है ना. Yes, sir. Yes, sir. तो तुमको ईएमएफ ऑफ द बैटरी फटाक से मिल गया. यू गॉट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी राइट राइट. Yes, sir. Yes, sir. sir, तो एक्यूरेट है, because while doing this I didn't have to cause a sample current to flow through the battery. हमको null point निकाल, सारा null point methods होता है ना electrical physics में, that's with a view to design accuracy, high accuracy. All null point methods are used so that high accuracy, because the moment you have current flowing, that will disturb your accuracy, that will produce errors. अब देखो यहाँ से तो हम कोई करंट फ्लो करवा ही नहीं रहे, सिर्फ जॉकी को प्यार से मूव करना पड़ता है. इसको पागल आदमी की तरह करोगे ना तो ये जॉकी इसको घिस देगा, इस वायर को, ये वायर घिस जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, जॉकी sir. को बड़े प्यार से मूव करना पड़ता है इसके, स्लाइडिंग जॉकी है. हाँ, Yes, sir. yes, sir, Yes, sir. all good so far. Yes, yes, sir. sir, Yes, sir. That's how you measure EPSA. Let me just take an example. So you know how to find the EMF of a unknown battery very accurately. Let's see. Do you realize it's perfectly accurate? क्योंकि इसका जो Yes, sir. actual EMF है ना वो दिख रहा है, पर अगर Yes, इसमें sir. करंट फ्लो करता तो वो नहीं दिखता. तो EPSA minus current into small r दिखता as terminal voltage. But now I'm getting the actual EMF of the battery, which you can obtain only if there is a no current situation through the battery. है ना? yes, Yes, sir, sir. Let me take an example. Right? Can I wipe this off? So all that EPSA is k times the null length. This is the length distance of this end from the jockey for a null position or a null point. Null point, zero deflection. है ना? yes, sir, Yes, sir. Yes, sir. देखो, suppose this is EPSA 1 known, so जो 25 वोल्ट से, जिसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस 5 वोल्ट से, और यहाँ पे वो थिक वायर है. AB का सपोज रेजिस्टेंस है, AB का रेजिस्टेंस कैपिटल R है, 20 और 25 ohms, सॉरी 5 वोल्ट्स लिख दिया, ये 5 ohms कर दो, इसका 20 ohms कर दो. ठीक है, Yes, sir. 20 ohms कर दो इसका रेजिस्टेंस. हाँ, और इसका सोचो लेंथ L ऑफ AB, सोचो 10 मीटर्स का लेंथ L 10 मीटर्स का, इसका AB का. yes, sir, नाउ ये अननोन है, ये अननोन गैल्वेनोमीटर है, ये Yes, sir. so you know सोचो ये at 2 meters null point मिला. at 2 meters एक्सपेरिमेंट से, ये 2 meters एक्सपेरिमेंट से आएगा. जॉकी को स्लाइड करते करते एक पॉइंट ऐसा दिखेगा जहां गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है बेटा.
राइट? Yes, Yes, sir. sir. 2 meters पर मिला, ये 8 meters है, ये 2 meters है। अब देखो यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा, करंट आई फ्लो करा 25, ये कितना है बाय 25 बाय 25 1 एम्प, 1 एम्प करंट फ्लो कर रहा है ना, हाँ, 25 वोल्ट डिवाइड बाय 5 प्लस 20, इसका पूरे का 20, और करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है प्राइमरी सर्किट में, क्योंकि नल पॉइंट पे आ गए, नीचे वाले सर्किट में देयर इज नो करंट इफ यू गेट Yes, टू sir. राइट, Yes, sir. Yes, sir. 1 amp current. अच्छा, from B to A, potential drop from B to A कितना होगा, I into R होगा, so 1 amp Yes, sir. into capital R कितना है 20 ohms है, तो ये 20 volts drop हुआ यहाँ। अगर ये जीरो रहता ना इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये 25 volts का पूरा B to A में ड्रॉप करता, Yes, sir. Yes, sir. so 20 volts is the drop, मतलब what's the potential gradient K, 20 volts divided by the length L, these many volts per meter, 2 volts per meter is the potential gradient बेटा, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ 2 volts per meter है very clearly, अगर A 0 volts है बेटा, B 20 volts है, 2 volts per meter है potential gradient, है ना। अब ये देखो ये 0 volts है, तो ये 0 volts है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एप्सा होगा, यहाँ पे भी एप्सा होगा, ये सारा में एप्सा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, एप्सा, Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एप्सा, बट एप्सा over 2 meters length would be what, K into L, Yes, sir. Yes, sir. K कितना आया, K आया 2 volts per meter into length 2 meters, so 4 volts आ गया, Yes, sir. है ना। So the EMF of the battery is 4 volts, बोलो सही है गलत। हाँ sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब एक चीज देखो कि जैसे जैसे जे यहाँ जाता जाएगा वैसे वैसे एप्सा कम रहेगा, है ना, बिकॉज ये लेंथ है कम, के एल एप्सा Yes, sir. वुड बी के 12, अगर जे को यहाँ शिफ्ट करोगे, अगर बैटरी ऑफ लोअर ईएमएफ जाओगे तो जे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता जाएगा, बैटरी ऑफ हायर ईएमएफ डालोगे तो एल ज्यादा चाहिए होगा, तो ये जे को यहाँ शिफ्ट करना होगा फ्रॉम, है ना। Yes, sir. सो व्हाट्स द राइटमोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ दिस, जे का राइटमोस्ट पोजीशन ये है, हाँ, sir. Yes, sir. the maximum length L is कितना, 10 10 meters, meters. 10. so maximum potential drop that it can measure is 20 volts, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब अगर ये एप्सा 20 वोल्ट से ज्यादा का होता ना, ये ये अरेंजमेंट जो है ना बेटा 20 वोल्ट्स वाला अरेंजमेंट, इट कैन मेजर मैक्सिमम, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट्स द मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ द बैटरी दैट इट कैन मेजर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इफ आई कनेक्टेड अ बैटरी जिसका ईएमएफ 25 वोल्ट्स होता, ठीक है, तो यार ये 20 वोल्ट्स में तो इसको कहीं पर भी नल पोजीशन नहीं मिलता ना, हाँ sir. तो उस बैटरी का ईएमएफ नहीं निकाल सकते हम। सो द हाँ, sir. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि द ईएमएफ ऑफ द बैटरी शुड बी लेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तभी मेजर हो सकेगा। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी should be less than the potential difference between A and B in the primary circuit. Yes, That's Yes, the sir. maximum EMF that can be measured. अब एक और चीज है, एक सर्किट और बना लो तुम, ठीक है, और ये सारा चीज अभी समझ लो, डोंट कीप इट इन अबेयंस। सो एक्सा 1 सोचो 30 वोल्ट से, और 1 सोचो 10 ओम से, इतना बड़ा, और 1 सोचो 2 ओम से, ये भी है थिक वायर, ये भी
AB का लेंथ है 10 meters, बहुत बड़ा होता है AB, and resistance of AB is say, इसको मैं कर देता हूँ 13 ohms. AB का रेजिस्टेंस 13 ohms कर देता हूँ, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये प्राइमरी सर्किट हुआ। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? I is 30 volts divided by total resistance 13 plus 2 amps करंट, ठीक है? 2 amps करंट फ्लो करेगा ना बेटा यहाँ? हाँ sir. हाँ sir. अब B से A Yes, sir. potential drop from B to A कितना होगा? I into R, Yes, sir. I कितना है? 2 amps, रेजिस्टेंस कितना है? 13 ohms, so 26 volts है, 26 volts है B से A में ड्रॉप, तो मतलब सपोज दिस वाज 26 volts, तो ये 0 volts होगा, है ना? ताकि अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? volts और लेंथ 10 meters है, 2.6 volts per meter है, ठीक है? ओके, Yes, sir. Yes, sir. सपोज ऐसा है, स्मॉल आर है, गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी, ठीक है? सपोज 4 meters पर L equal to 4 meters पे null point आता है, what is epsa? epsa कितना है? सपोज 4 meters पे, ये पूरा 10 मीटर पे 4 meters पे null point आता है, तो epsa कितना है बताओ मैं? So polarity reversed है. राइट, यहाँ पे null point मिल ही नहीं सकता। अब ये that's exactly the reason I gave you this. फटाक से तुम गड़बड़ काम कर दोगे, तुम बोलोगे K into L 2.6 into 4 8 10.4 epsa volts, no, यहाँ पे कभी हो ही नहीं सकता null point इस केस में। I'll tell you क्यों नहीं हो सकता null point। ऊपर का करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हाँ sir. अब देखो अगर ये 0 वोल्ट्स है तो ये भी 0 वोल्ट्स हुआ, Yes, sir. और ये एप्सा कम है तो ये माइनस Minus एप्सा epsa. हुआ, और यहाँ अगर नल पॉइंट है तो ये माइनस एप्सा हुआ, Potential decrease कर रहा है. डायरेक्शन में तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ये तो माइनस एप्सा से 0 इंक्रीज कर रहा है, हाँ sir. तो ये अरेंजमेंट गंडगोल अरेंजमेंट है। तुम अगर पोलैरिटी गड़बड़ कर दिए बैटरी का, पोलैरिटी अगर गड़बड़ कर दिए बैटरी का, तो कभी नल पॉइंट मिल ही नहीं सकता। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें फंडा क्या है, जो चीज याद रखने का है, ऐसा सोचो, ये बैटरी सपोज ये नोन बैटरी है और ये अननोन बैटरी है, इसका पोलैरिटी हमेशा ऐसे कनेक्ट करना, ध्यान रखना, इसमें हो ही नहीं सकता था, ठीक है? पुराने अरेंजमेंट में हमेशा याद रखना ऐसा रहेगा ये अननोन बैटरी का। अब ये अगर इसका प्लस राइट में तो इसका प्लस भी राइट में होना चाहिए, इसका माइनस लेफ्ट में तो इसका माइनस भी लेफ्ट में होना चाहिए, ऐसा याद रखना, Yes, sir. Yes, तभी sir. नल पॉइंट मिल सकता है, नहीं तो नल पॉइंट मिल नहीं सकता। सो व्हाट आर द टू थिंग्स, क्रिटिकल थिंग्स? वन, कनेक्ट एप्सा प्रॉपरली, एप्सा को प्रॉपरली कनेक्ट करना होगा। इसका प्लस है यहाँ पे, इसका प्लस भी राइट में होना चाहिए, इसका माइनस यहाँ है तो इसका माइनस भी लेफ्ट में होना चाहिए, या इसका प्लस यहाँ पे तो इसका प्लस भी यहाँ होना चाहिए, इसका माइनस यहाँ है तो इसका माइनस भी यहाँ होना चाहिए, सेम सेम डायरेक्शन में ऐसा होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो epsa should be less than epsa across AB। अक्रॉस AB में जो epsa है ना, उससे कम होना चाहिए ये epsa, तभी मेजर करेगा। Yes, sir. Yes, sir. These are two important things, right, to measure epsa। क्लियर? Yes, sir. अब देखो बेटा,
So now I know how to measure EMF of a battery. ये बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, उसको यहाँ से कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट करो और नल पॉइंट निकालो. कई बार ना इसका अरेंजमेंट थोड़ा लोग अलग तरीके से भी करते हैं. लेट मी जस्ट शो यू दैट. समझ गए कैसे? खाली L निकाल लो. K पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो K into L हो जाएगा नल पॉइंट. अब इस केस में 4 मीटर है तो एप्सा क्या हो जाएगा? एप्सा हो जाएगा K into L. K into L मतलब 2.6. अब पोलैरिटी ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं. ये राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट. K into L मतलब क्या? 2.6 into 4. These many volts. 10.4 volts होगा इसका इनपुट. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Instead of connecting this arrangement to A, some people like to connect it to B also. मतलब ऐसे भी करते हैं. So that if in an exam it comes that way, you're not flummoxed. Someone. R1. A to B है प्राइमरी सर्किट. इसमें करंट I कितना फ्लो करेगा बेटा? और AB का रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, तो करंट कितना होगा? Epsilon divided by total resistance, right? R1 plus R is going to be the current, right? Potential gradient क्या होगा बेटा इसमें? Potential gradient हो जाएगा. What is the total drop in potential? I into R divided by length L. Right? I to R is the potential drop from B to A divided by length L. These many volts per meter है ना? I to R होगा drop from B to A divided by length L. So K पता है हमको. K also have found. Right? अब हम क्या करते हैं? हमारा सर्किट ऐसा. ये मेरा अननोन बैटरी. Some unknown. Resistance small r. एक गैल्वेनोमीटर है. तो ये स्लाइडिंग जॉकी है. ये नल पॉइंट है. ये नल पॉइंट है. And say that's at a distance small l from B. अब B से small l पर है. ये नल पॉइंट मिला मतलब सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. तो जो आई यहाँ पहले कर रहा था अभी भी यहाँ पे फ्लो करेगा. नीचे वाले का सर्किट को पता ही नहीं ऊपर वाले के सर्किट को. Yes, sir. Yes, sir. The primary circuit is oblivious of the presence of the lower circuit. Yes, sir. Secondary circuit, right? Yes, sir. अब देखो बेटा, B से J में पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है. Yes, sir. ये हो नहीं सकता. ये देखो ये गलत है पोलैरिटी. Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि अगर यहाँ इसका प्लस राइट में है तो इसका प्लस भी राइट में होना चाहिए. हाँ sir. हाँ, Yes, sir. sir. गलत है. इसको सबसे पहले ठीक करो. इसको ठीक किया. एप्सा अननोन है, नहीं तो हो ही नहीं सकता था. ठीक है. हाँ, sir. हाँ sir. अब नल पॉइंट है वेरी क्लियरली. अगर ये सोचो, सपोज आई टेक दिस एज 0 वोल्ट्स. सपोज आई टेक दिस एज 0 वोल्ट्स. ये सारा 0 वोल्ट्स होगा, ये 0 वोल्ट्स होगा. यहाँ से यहाँ एप्सा कम हुआ तो ये माइनस एप्सा हो जाएगा ना. यहाँ से एप्सा कम हाँ हो sir. जाएगा तो 0 वोल्ट से माइनस एप्सा. कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे अक्रॉस रेजिस्टेंस देयर इज नो ड्रॉप. तो ये सारा माइनस एप्सा है, माइनस एप्सा है. यहाँ आके ये भी माइनस एप्सा हो जाएगा, है ना? हाँ, तो sir. यहाँ कितना ड्रॉप हुआ? एप्सा ड्रॉप हुआ. 0 से माइनस एप्सा, एप्सा ड्रॉप हुआ. एप्सा ही तो निकालना है. Yes, sir. पर ओवर लेंथ सेल कितना ड्रॉप होना चाहिए? K K into L. कई बार ऐसे Yes, भी बनाते. some people orient the circuit like this also. So important thing is ये राइट में है तो ये राइट में होगा प्लस इसका. इसका माइनस लेफ्ट में तो इसका माइनस लेफ्ट में होना चाहिए. चाहे A से कनेक्ट करो चाहे B से कनेक्ट करो. It does not matter really. Got yes it? sir. Yes, sir. Yes, sir. So now one thing that we have learned very easily is how to compute the EMF. How to compute the EMF, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Taking how to compute the internal resistance of the cell. है ना? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir.
next we look at how to compute the internal resistance small r of this unknowns. X. उसका internal resistance compute करना है. Yes, sir. So now वही पुराना वाला सर्किट minus plus which is epsilon, ये R1 है, and then I have this primary circuit A to B, ये thick wire है like before, resistance of AB is R, length L. AB का resistance is R and length L. Okay? Uniform sir. cross section है. Now, अब ये तो primary circuit. इसका obviously current कितना flow करेगा इसमें? I equal to epsilon divided by capital R plus R1 current. And drop from B to A क्या होगा? Potential drop from B to A is V volts, which would be I into R. ये पता है? I into Yes, sir. इसका potential gradient, P potential gradient क्या हो जाएगा? K will be what? V divided by L. यहाँ से drop is V over length L, so V by L volts per meter would be the potential gradient. Right? Yes, sir. Yes, sir. K पता है, सब कुछ पता है हमको, V पता है, L पता है, सब क्या है. अब प्राइमरी सर्किट है, इसका करंट इंटैक्ट रहेगा because the secondary circuit will be connected in a manner, secondary circuit will be connected in a manner such that a null point is obtained, so that in the secondary circuit there is no current. तो ऊपर वाले सर्किट का nothing will get affected. Yes, sir. The potential gradient will then become a property of the circuit above. है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या? This is my cell. याद रहे polarity उसका ऐसा रहना चाहिए. ये राइट में है तो ये राइट में, ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में. ऐसा है इसका और इसका स्मॉल r. राइट, स्मॉल r कंप्यूट करना है हमको. एक यहाँ पे की ले लो. This is a key. स्लाइड की है, जिस के कैपिटल के बोल दो, जो स्लाइड कर सकता है. गैल्वेनोमीटर है, उसका एक जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी, स्लाइड करें. I need to find smaller. I need to find smaller. तो सबसे पहले what I do is पहले स्मॉल एप्सा निकाल लेते हैं. Yes, sir. ठीक है, स्मॉल एप्सा क्या करेंगे? स्मॉल एप्सा निकालने के लिए ये की को क्लोज करेंगे और सपोज ये लेंथ L1 है फॉर नल पॉइंट, के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, देन ओवर लेंथ L1 के एप्सा विल बी के L1, है ना, जैसे पहले किया था. बिकॉज अगेन ये 0 वोल्ट से, ये 0 वोल्ट से, ये एप्सा है, ये सारा एप्सा है, ये एप्सा है. तो एप्सा विल फीचर हियर व्हिच विल बी KL1. पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम A to B, A to J विल बी KL1, दैट इज एप्सा. एप्सा निकाल लिया एक नल पॉइंट से. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, आई फाउंड एप्सा, found epsa using null point L1. L1, this length is the null point. उससे epsa निकाल लिया. All right. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते. अब देखो, स्मॉल r निकालने के लिए क्या करेंगे?
स्मॉल आर निकालने के लिए व्हाट आई डू इज एक ना यहाँ पे आई हैव अ रेजिस्टेंस बॉक्स आर। अब अगर एक रेजिस्टेंस बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, इसमें ना इट हैज अ कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तुम लोग अनफॉर्चुनेटली कभी लैब में नहीं गए ना, तो रेजिस्टेंस बॉक्स देखे नहीं होगे। उसमें ना जो रेजिस्टेंस निकालोगे ना उतना ही वहां रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसमें रेजिस्टेंसेस मार्क्ड रहता है, पता नहीं कभी देखे हो कि नहीं देखे हो। तो जो भी है मेरे जैसे आरबी ले आएंगे and I'm going to connect it across this arrangement like this. अब देखो नल पॉइंट चेंज हो जाएगा, मेरे को बता सकते हो? अब जो नया नल पॉइंट होगा ना वो L1 से ज्यादा होगा कि L1 से कम होगा? एग्जैक्टली L1 ही होगा। हाँ, सर L1 ही रहेगा। नया नल पॉइंट नहीं बेटा, नहीं। अब L1 नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि ये L1 पे तो ड्रॉप था KL1। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. और ऐसा है, Yes, sir. तो यहाँ पे तो बेटा करंट फ्लो करेगा ना। हाँ सर। Yes, sir. अब यहाँ अगर करंट फ्लो करेगा तो अब इन दोनों के बीच में ड्रॉप एप्सा नहीं रहेगा, अब इन दोनों के बीच में ड्रॉप हो जाएगा एप्सा माइनस द ड्रॉप। तो अब Yes, यहाँ sir. और यहाँ के बीच में ड्रॉप कम हो गया ना। हाँ सर। KL1 घट गया। कितना? KL1 से कम हुआ ड्रॉप, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. करेगा नया नल पॉइंट का, डिक्रीज कर गया सर। डिक्रीज करेगा, क्योंकि अब इन दोनों पॉइंट के बीच में ड्रॉप एप्सा नहीं है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. करंट यहाँ फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर फिर भी जीरो डिफ्लेक्शन फ्लो शो करेगा, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा बेटा, ठीक है? गैल्वेनोमीटर से नहीं करेगा, पर इस नीचे वाले, सबसे नीचे वाले सर्किट में फ्लो करेगा करंट, वो कोई नहीं रोक सकता। Yes, sir. यस Yes, sir. अब क्या होगा? L2 becomes after, so this is resistance box and I select a resistance RB. Select a resistance RB. तुम जान रहे हो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा ही, कौन रोक सकता है बताओ मेरे को? तो यहाँ ड्रॉप एप्सा नहीं रहेगा, यहाँ एप्सा माइनस करंट इनटू आर हो जाएगा इन दोनों के बीच में ड्रॉप, और यहाँ तो दिस विल रिफ्लेक्ट ओनली एप्सा, है ना? तो नहीं होगा, अब कम हो गया, तो L1 से कम होना चाहिए। Select a resistance RB from resistance box, from resistance box. अब ये L1 तुम लोग नया सर्किट बना लो, एक बार एक नया सर्किट बना लो, न्यू नल पॉइंट becomes L2, becomes L2, clearly less than L1, clearly less than। एक बार नया सर्किट बना लो, I'll wait, एक बार पॉज कर लो बेटा और ये नया सर्किट बना लो। अब Yes, sir. नल पॉइंट जब खाली स्मॉल आर और एप्सा कनेक्टेड था तब नल पॉइंट वाज L1, so that helped me compute एप्सा, एप्सा is KL। अब ये वाला पार्ट कनेक्ट कर दिया ना, उसके बाद द न्यू नल पॉइंट बिकम्स एप्सा। अब देखो क्या होगा, व्हाट इज दैट? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, व्हाट इज द ड्रॉप? KL2 will be the new drop। Yeah. यहाँ से यहाँ ड्रॉप will be KL2। यस सर। Now null point है तो there is no flow of current through the galvanometer, Yes, Yes, sir. sir. right? But this time it doesn't mean कि यहाँ पे करंट नहीं है, यहाँ पे तो करंट है। The current here is I1, Yes, sir. right? What is I1 बेटा? I1 would be एप्सा, जो कि निकाल चुके हो तुम, Yes, sir. divided by small r plus R r plus RB. plus I1। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। What is the drop across RB? अब ये देखो, drop across RB, RB is I into RB, is I into RB will sorry I1 into RB is the drop, यस सर। Yes, sir. which is I1 है एप्सा by R plus RB into RB, that's the drop, right? यस सर। Yes, sir. Now
realize that देखो ये सारा null points है. Suppose this was 0 volts. So ये सारा all of this will be 0 volts. Yes, Right? sir. And ये कितना होगा? This will be V1, the drop across this, right? यहाँ से यहाँ drop V1 है. So let me call this V1 ताकि अगर ये 0 है तो this will be V1, Yes, sir. right? यहाँ Yes, sir. ये 0 है. V1 will be the drop from RB, which is I1 into RB, which is this, right? ये Yes, sir. V1 है, Yes, sir. ये V1 है, right? Electrically same point से galvanometer से कोई current flow नहीं करा, so all these are V1. So this V1 will show here, yes or no? Yes, sir. And Yes, this sir. V1 must be KL2. V1 minus 0 must be KL2. Yes, sir. So V1 minus 0 must be KL2. K potential gradient है. V1 क्या है? V1 is this epsilon divided by small r plus RB into RB is KL2. Right? RB is known. I've selected this resistance RB. If I change this RB, this L2 will change. Yes. Yes, sir. Right? ठीक है. अब ये देखो ये कर लिया हम लोगों ने. This epsilon I can write as KL1. ये Yes, sir. epsilon small r plus RB into RB is KL2. Epsilon replaced by KL1. खाली epsilon था ना without the low resistance, then the null point was L1. So epsilon will be KL1. So I have like a L1 by R plus RB into RB. K कट जाएगा देखो K कट जाएगा और ये KL2 है KL2 है sorry. R RB is KL2. So ये L2 आ जाएगा. I then have like a R plus RB by RB is L1 by L2. Very clearly देखो यहाँ से भी मालूम पड़ रहा है. This is greater than 1 ना. So L1 by L2 is greater than 1. So L1 is more than L2. यहाँ से भी दिख रहा है. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. L2 छोटा होना चाहिए. इसमें small r क्या आ जाएगा? Small r will be L1 by L2 ये 1 से डिवाइड किया. -1 यहाँ जाएगा into R. RB resistance box से जो select. L1 is the null point obtained just to get epsilon. L2 is the null point obtained with a resistance RB selected from the resistance box like this. Yes, sir. So this is RB is the resistance selected from the resistance box. L2 is the final null point with the resistance box resistance being in place. L1 without the resistance box खाली epsilon calculate करने के लिए. That's how you compute the internal resistance of the cell. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now, it's also used to, this arrangement is also used to compare EMFs of two cells. Not simple है ये. To compare EMFs of two cells. To compare EMFs of two cells. K पता है etc. So this is one cell. ध्यान रहे polarities ध्यान रखना minus plus. So let me call it x. एक और cell है. Call it x prime. And I can have. So what I do is I have the galvanometer like this. This is the jockey. There can be a key like this. And there can be a key like this. Okay. So
K है और ये K प्राइम। अब ये K ओपन रखोगे और ये क्लोज करोगे तो I get the null point for this L. So epsa will become ये K, by the way this K is potential gradient, this is just the switches, ठीक है। K L हो जाएगा इसका अगर null point, epsa prime क्या हो जाएगा, suppose इसका null point epsa prime इसको ऑन किया, suppose इसको ऑन किया तो ये inactive है, then the new null point L prime will give me epsa prime, दोनों बैटरी का अलग, so epsa by epsa prime would be L by L prime. L and L prime are null points for ऊपर वाला, जब इस की को ऑन किया तो ये वाला की खोल के रखा, so that इसका कोई मतलब ही नहीं, like this, और जब ये खोल दिया तो ये क्लोज कर दिया, so that ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं है, तो L और L prime बदल जाएगा, epsa by epsa prime would be the ratio of the null points for the two batteries. That's how you compare it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, one more thing that I want to tell you is, suppose this is a potentiometer wire, okay? This was the potentiometer wire. I'm not drawing the full circuit now because I'm talking of something else. Okay? This is the potentiometer wire, say 10 lengths and 10 meters in length, 10 meters in length, and there is a metered scale attached to it so that I know. Generally, क्या रहता है? You know, these divisions with which I measure lengths. Generally, these divisions, separation between these two successive divisions is 0.1 centimeter. 0.1 centimeter कितना होता है? 1 millimeter होता है ना? 1 centimeter is 10 millimeters. Successive divisions के बीच में distance 0.1 centimeter होता है, right? Yes, Yes, sir. sir. Now, so potential gradient is what I need to know what the potential difference between these two would be. Yes, sir. K is the potential gradient. Gradient. तो ऊपर वाला सर्किट नहीं बता रहे. Let's have computed the potential gradient, which is change in potential over the total length, volts per meter. Huh? Yes, sir. Now, what is that? Higher or lower? Potential gradient K. Should we prefer a higher value of potential gradient or a lower value of potential gradient? Okay. Yes, sir. Yes, sir. A higher value of potential gradient or should we prefer a lower value of potential gradient? अब सोचो, बहुत सिंपल सा चीज. Suppose say K is say 200 volts per centimeter. Say K is 200 volts per centimeter. All right. Yes, Yes, sir. तो अगर K 200 volts per centimeter है and then I have 2 points P and Q. Right? 2 points P and Q, and these are two nearest points on the scale. These are two nearest points on the scale, 0.1 centimeter. Yes. इनमें potential difference कितना होगा? 200 volts per centimeter into 0.1 centimeter, which is 20 volts, will be the potential difference between P and Q. Yes, sir. Yes. Yes, sir. This instrument कोई भी रीडिंग P और Q के बीच में तो मेजर नहीं करेगा. Yes, sir. yes, sir. या तो P होगा या Q होगा. P पर एक्चुअली तो नल पॉइंट P और Q के बीच में भी हो सकता था नल पॉइंट. The हाँ, null sir. point
could have been here. अब देखो नाउ क्या ले सकते हो स्केल तो स्केल का जो लीस्ट काउंट है ना वो 0.1 सेंटीमीटर है. Yes, sir. मतलब क्या हुआ ना जो P से रीडिंग होगा वही Q से रीडिंग P और Q के बीच में 20 वोल्ट्स का फर्क है. हाँ sir. Right? But suppose difference I want to measure is 15 volts. This will not measure. This will measure the smallest difference that it can measure is 20 volts. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 310 वोल्ट काउंट कर सकता है, 330 वोल्ट काउंट कर सकता है, 350 वोल्ट्स काउंट कर सकता है. ये अरेंजमेंट बिकॉज इस अरेंजमेंट का लीस्ट काउंट 20 वोल्ट्स है. 20 वोल्ट्स के नीचे का ये अरेंजमेंट मेजर ही नहीं कर सकता है. Yes, sir. Yes, sir. You know what I'm saying? Yes, sir. So that is 310 volts. This point would be 330 volts, for example. It can, but it cannot measure something like 315 volts. Yes, sir. Yes, sir. Right? But suppose, say, K is, say, 100 volts per centimeter. अगर 100 volts per centimeter है, तो इन दोनों के बीच में potential drop कितना होगा? 10 volts. 10 volts. अब ये देखो इसका लीस्ट काउंट 10 वोल्ट्स हो गया. अब ये अरेंजमेंट क्या क्या मेजर कर सकता है? इट कैन मेजर 310 वोल्ट्स, इट कैन मेजर 320 वोल्ट्स, इट कैन मेजर 330 वोल्ट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. राइट? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो कौन सा बेटर है? जिसका जो भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इट कैन मेक इज द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. तो लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट सेंसिटिव होगा ना इंस्ट्रूमेंट. हाँ sir. Yes, sir. Why do we use a vernier caliper compared to, let's say, a normal scale? Because the vernier caliper or screw gauge has a smaller value of least count than a scale that you use. Yes, sir. Yes, sir. Right now? Yes, sir. So lower values of potential gradient are better than higher values of potential gradient. है ना? Yes, sir. Yes, sir. Now look, suppose this is V volts and this is 0 volts. Potential gradient क्या हो जाएगा? V minus 0 by N. अब V बहुत छोटा नहीं, so smaller case preferred. Yes, sir. Smaller K क्या हो सकता है? या तो V छोटा कर दो या L बड़ा कर दो हाँ, sir. Yes. या दोनों कर दो. अब V अगर बहुत छोटा कर दोगे तो then there is a limitation because the maximum EMF it can measure is now V volts. You Yes, don't sir. want to limit that Yes. much. You want V to be large enough Yes, sir. Yes, sir. so that you have a greater range of batteries that you can measure. So Yes, you Yes, want sir. K to be large, but तो K छोटा करने का क्या तरीका है? L को L. बढ़ाना. So Yes, sir. K should be small. Small. But V should not be very small. अब तो रेंज ही कम जाएगा, है ना? V should not be very small. So how to make K small? Increase N. L बढ़ा दो. इसीलिए वो जो 10 मीटर्स का वायर यूज करते हैं ना, वो इसलिए यूज करते हैं. Yes, sir. It's a very long wire. 10 meters is huge. पर उस 10 meters को एक साथ तो नहीं रख सकते हो, उसको घुमा के रखना पड़ेगा. Yes, sir. Right? So for a potentiometer with superior sensitivity, smaller potential gradients are better than higher potential gradients. How do we get small potential gradients? Not by decreasing V, but by increasing the L. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट दो सक्सेसिव डिविजन्स ले लो इस स्केल में, multiply by that potential gradient, that will give you the least volts that it can measure. ठीक है? Yes, 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 sir. sir.
That's the story of the potentiometer. Now, so that's as far as comparing cells are concerned. That's EMF of a cell is concerned, finding the internal resistance very accurately. Problem क्या है? सिर्फ disadvantage है, बहुत bulky arrangement है. It's a very bulky arrangement. That's the only demerit of this arrangement. Got me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, there are times you want to measure an unknown resistance, right? There is a very simple arrangement that could be used to measure unknown resistance. How to measure an unknown resistance? How to measure an unknown resistance? Pehla cheez, if you remember, our Wheatstone bridge network. कैसा अरेंजमेंट था? ये R1 था, ये R2 था, ये गैल्वेनोमीटर था यहाँ पे, R3, current entering here and leaving there, right? And I wanted P and Q to be at the same potential. P और Q same potential में होंगे तो there will be no flow through the galvanometer. Galvanometer will show null deflection, right? Yes, sir. Yes, sir. If VP is VQ, it's a balanced Wheatstone bridge, है ना? Yes, sir. Between किन दो points? Between say points A and B. मतलब A is the point where the current enters, B is the point where current leaves. यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड हो सकता है, वो दिखा नहीं रहे, जरूरत नहीं है. Balance Wheatstone between A and B. ठीक है? इसका मतलब क्या है? A से Q में अगर P और Q सेम पोटेंशियल है, तो A से P में जो ड्रॉप होगा, वही. So this I gets divided as, if you remember, this was I1, this was I2. So A से P में जो ड्रॉप होगा, that must be the same as the drop from A to Q, because P and Q are at the same potential, and A is the initial Yes, point. sir. We must have I1 R1 equal to I2 R2, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Now when this I1 comes here, since P and Q are at the same potential, ये यहाँ से flow ही नहीं करेगा. Galvanometer shows zero deflection, so I1 Yes, sir. Similarly, this I2 when it comes here, no part of it goes through this. ये I2 यहाँ चला जाएगा, right? Again, drop from P to B should be the same as drop from Q to B because P and Q are at the same potential, right? So यहाँ से यहाँ और B common point है. So यहाँ से यहाँ drop हुआ I1 R3 and यहाँ से यहाँ drop हुआ I2 R4, and I get the condition for balanced Wheatstone bridge. R1 by R3 is R2 by R4. Either you can say this by this is this by this, yeah, this by this is this by this, then P and Q will be at the same potential. It's a balanced Wheatstone bridge. And इसका resistance क्या हो जाएगा फिर? This and this in series in parallel with this and this will be the total resistance between A and B, right? Yes, Yes, sir. sir. है ना? ये balanced Wheatstone bridge. Okay. This by this equal to this by this. Now, the meter bridge, which I'm going to discuss, is the arrangement used to measure this unknown resistance. Actually, क्या होता है? Again, in this case also, what I use is a wire, but this time not a 10-meter wire, a 1 meter long wire. What I have is in a meter bridge, as the name suggests, I have a 1 meter long wire. And this time I need to know one meter long uniform wire. Uniform area of cross section. Uniform area of cross section. Wire
AB. Uniform wire AB 1 meter long. And you know there is a meter scale connected to it, so it's like 0 centimeters at this end to 100 centimeters at this end, and इसका 1 millimeter divisions है. The divisions are 1 millimeter. मतलब इसका least count is 1 millimeter, right? जैसे normal meter scale में होता है. Now, so I'm not again drawing that, you know, scale here, but yeah, scale रहता है, attached scale रहता है. Yes, sir. Now what I have is एक metallic strip, normally copper, metallic strip, जिसका resistance 0 रहता है करीब करीब. Metallic strip यहाँ पे एक metallic strip यहाँ पे, another metallic strip. And see, electrically ना अगर ये conductor है, all points here would be the same as A, Yes, sir. right? Yes, sir. So I have say this is ये भी एक metallic strip. This is an unknown resistance. This S known resistance. Actually यहाँ पे ना I put a resistance box and I can vary this resistance S. A known resistance to be selected aptly from a resistance box. एक resistance box है जिसमें S select किया. How to select that S? I'll come to it. From a resistance box suitably. ये लेकिन 1 मीटर ही रहेगा. मीटर ब्रिज में length is 1 meter only, 100 centimeters. Suitably. Known resistance selected suitably. How to select that? I'll tell you. Okay. You know, if this is A, this is also like A. All these points are A. Electrically, ये conductor है, right? All these points are A. ये अगर P है, तो all these points are essentially P. All these points are electrically P. अगर ये strip है, a metallic strip will short circuit. सारा points को same potential पे ले आएगा. हाँ, sir. Yes, sir. These are all A's. These are all P's. And then इस P से एक और P से what I have is एक galvanometer है with a moving jockey, sliding jockey. सोचो ये पॉइंट Q है. Q. अब देखो, if I have to redraw the circuit, you know, if I have to redraw the circuit, then my circuit is, and do you realize this length is L. Suppose ये jockey का sliding point L है, तो ये length क्या होगा? 100 minus L. Yes, sir. Now this is the same wire. In a same wire, resistance is SL by A. Resistance will be proportional to length.
Yes, sir. Yes, sir. So resistance of AQ, resistance of AQ would be AQ would be some constant C into L. वो constant C क्या हो जाएगा? S by A, specific resistance by area of cross section. C Yes, sir. L is the resistance of AQ. Similarly, C into L or resistance of QB. QB इसका क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा? C into 100 minus L. सेम वायर का अलग लेंथ है, right? C into 100 minus L. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये सर्किट हुआ, right? Now यहाँ पे एक ऐसा सेल कनेक्ट किया गया, पूरा बना लो डायग्राम. सेल कनेक्टेड ऐसे, उस सेल से there is a current I that goes here, it comes to A, है ना? वो करंट का एक पार्ट I1 यहाँ जाता है और एक पार्ट I2 यहाँ आता है ना? Yes or no? Yes, sir. I1 comes to P. Now what I do, ये I1 P पे आ, उसको रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को इन अ नोड टोपोलॉजी. A ऐसा है, A से P के बीच में एक रेजिस्टेंस R है, P के बीच में there is a resistance R, right? P और Q के बीच में, अच्छा A से Q के बीच में there is a resistance C into L. A to Q, this resistance, A to Q, this resistance is C into L, है ना? This resistance is C into L, A to Q, right? Yes, sir. Between P and Q there is a galvanometer. Between P and Q there is a galvanometer. Now, ये सारा, suppose this is P. Realize if this is B, all these points are B only electrically. ये short circuit हो गया copper strip के कारण. हाँ, sir. All these points are B, right? Yes, sir. P to B there is a resistance S. B यहाँ पर है. P to B there is a resistance S. And Q to B there is a resistance C into 100 minus L. Q to B there is a resistance C into 100 minus L. ये सर्किट हुआ ना? समझ गए हो? Do you all understand what I'm हाँ, doing? sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बना लो, ऐसा सर्किट हुआ. Q is that sliding jockey. Q is that sliding jockey. Right? Yes, sir. Now, what I do is, I select an appropriate value of S. And so, and I slide this jockey here. If I slide this jockey, then CL and C into 100 minus L will vary. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This resistance will vary. But there will be a certain position of the jockey where the galvanometer will show no deflection. Yes, sir. For a Yes, certain sir. length L here, there will be no deflection of the galvanometer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right? So what I do is I put Q such that there is no deflection of the galvanometer. Of G. This is a null point for the galvanometer. मतलब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो P और Q सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा. P और Q सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, Yes, हाँ, sir. sir. है ना? अगर Yes, sir. सेम पोटेंशियल Yes, पे sir. आ जाएगा, तो Lead from bridge. Keystone bridge between A and B. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Balance sir. lead from bridge. Balance Keystone bridge create कर लेंगे, and I have that option. I can slide this jockey. Yes, sir. Yes, sir. Such is J.
सच इज एल, ये एल है और ये 100 माइनस एल है, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा सी इंटू एल, इसका रेजिस्टेंस ये पार्ट ये है और ये पार्ट ये, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Balance Wheatstone bridge between A and B. So obviously this R divided, divided by CL equal to S by. Yes, है ना? sir. So R by CL must be equal to S S by C into 100 minus L. by C into 100 minus L. C कट जाएगा, so R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा S into L divided by 100 minus L. S into L divided by 100 minus L. That will be S पता है, length इसके एक्सपेरिमेंट से L निकाल लिया है. Yes, sir. Yes, sir. We'll compute the unknown resistance from this formula. Yes, sir. Unknown resistance would be known resistance S into this length L divided by this length 100 minus L. मतलब if this is 40 centimeters, this will be 60 centimeters, Yes, sir. Yes, sir. right? Yes, sir. Yes, sir. As simple as this. It's such a direct application of the Wheatstone bridge. Such a Yes, direct sir. application of the Wheatstone bridge. All right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I think I'll stop here today. See, one thing that I want to tell you. ये जो तुम लोगों ने स्पेशली सीबीएसई का सिलेबस देखा है कि नहीं? Ammeter galvanometer is part of magnetism. Ammeter voltmeter, but this is part of current electricity. This one is part of current electricity. You know, potentiometer and meter bridge, and they give situations around this. All right. So we'll also solve a few problems. Although you know, problems here are very simple on this, very simple. But in IITs and all competitive exams and board exams, they have an uncanny knack of posing problems around potentiometer and meter. एक और चीज है जो कि बोर्ड्स में नहीं है बट आईआईटी में, वो हम बाद में पढ़ाएंगे, which is called the post office box. One more thing, but this experimental physics is important. Yes, sir. आईआईटी में देते हैं ये लोग, generally they like to give some छुटका, they are generally very easy to solve compared to non-experimental physics. They are very easy to solve. All right. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this essentially brings us to the end of the theoretical aspects of current electricity. अब हम लोग कुछ problems करेंगे which would include current electricity as well as capacitors, या only one or the other one or both. We'll solve problems. Now concept wise we are in place. अब हमको और concept पढ़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? We can straight away jump to problem solving now. Yes. After this, see, my original plan was to teach you geometrical optics. That's what I normally do. But term 1 of CBSE does not include Magnetism, geometrical optics. It includes magnetism. So after I solve problems on electricity and capacitors, I'll move to magnetism, in fact, instead of geometrical optics. Yes, sir. Yes, तो sir. सिलेबस तो अजीब बना दिया ना, वोल्ट मीटर को मैग्नेटिज्म में डाल दिया. है बेटा? समझ में नहीं आया सर, सीबीएसई इतना अजीब सिलेबस क्यों बनाया, मतलब वोल्ट मीटर को मैग्नेटिज्म में डाल दिया. तो बेटा उसका कारण है, क्या है, वोल्ट मीटर और एमीटर जो है ना, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है? और गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, दैट्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. यस सर. वो कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं उसको, दैट्स बेस्ड ऑन, इसीलिए वो लोग उसमें डाल दिया, और कोई कारण नहीं है. और वैसे तो यार सीबीएसई का अब हम रिकॉर्ड हो रहे हैं इसलिए, नहीं तो हम बोलते मेरा रिकॉर्डिंग रोक दे.